सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हेलो हाँ सर अब आ रही है। इसमें बीच बीच में वो हाँ सर अब आ दिखा रही रहा है है। कुछ। अच्छा ठीक है, सो लेट्स गो वेयर वी वेयर। इसमें बीच में कुछ लिखा था अनस्टेबल इंटरनेट कुछ, तो उस वक्त कुछ आवाज में हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट जो मैंने कहा था इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो हमने देखा था एक स्पेस पे, एक वेक्टर स्पेस पे एक से ज्यादा नॉर्म्स डिफाइन हो सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की। तो इक्विवेलेंट नॉर्म्स होते हैं। नाउ लेट, जरा मैं ये करता हूँ, let X be a linear space, a vector space, then two norms. मानो इस पे दो norms defined है. Let's call one this thing, the other one the prime norm. Be two norms on X. Then this and norm prime are said to be equivalent. हम उनको equivalent कहते हैं. If there exists positive numbers, let me call it small k and capital K, they are just positive numbers, such that, ऐसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो मैं इसको प्राइम लेता हूँ, k times this prime norm is less than equal to norm of x, which is less than equal to this capital K times for all x belonging to x. तो ये है इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन, यानी एक नॉर्म लेस देन इक्वल टू सम k टाइम्स है या वाइस वर्सा. सो तो two equivalent norms give rise to the same topology. मतलब बेसिक आइडिया यही है, जो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं ऑल्दो दे डिफरेंट होंगे, लेकिन जो ओपन सेट्स वो जनरेट करेंगे वो सेम होंगे. इक्विवेलेंट नॉर्म्स जनरेट द सेम टोपोलॉजी. इस पे हम शायद आगे भी कहीं पे करेंगे बहस, लेकिन अभी के लिए ओके. इसमें एक होम असाइनमेंट है जो ज्यादा मुश्किल नहीं है. ऑल नॉर्म्स ऑन अ फाइनाइट, ये रिलेटेड है उससे कि every linear function, linear operator on a finite dimensional subspace is continuous. All norms on a finite dimensional space are equivalent. ये तुम्हारा होम असाइनमेंट, ठीक है. Now then there is another thing.
जैसे हम दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस देखते हैं तो उनमें फिर हम देखते हैं व्हाट इज अ होम्योमॉर्फिज्म, यानी व्हाट आर द स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप्स। इसी तरह से वी से ये एक और डेफिनेशन मान लो, टू नॉर्मल लीनियर स्पेसेस, linear spaces are said to be isometrically, let me call it X and Y, isometrically isomorphic if there exists a map T from X to Y that is a linear bijection. It's a one onto map that's linear, उसका मतलब उसका inverse भी linear होगा, and norm of Tx, it also preserves the norm. And we write, हम इसको लिखते हैं, X is isometrically isomorphic to Y. So they are essentially the same as normal linear spaces. मतलब ये map bijection है, it also preserves the linear structure as well as the norm. तो जब ऐसा होगा यानी हम कह रहे हैं कि x और y सेम है as far as as far as we consider them normal linear spaces. यानी जब इसको as normal linear spaces they are essentially the same. It is just a relabeling. जैसा कि तुम algebra में देखते हो या टोपोलॉजी में देखते हो होम्योमॉर्फिज्म, अलजेब्रा में देखते हो आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ दोनों चीजें हैं एक तरह से. There is a little subtlety here, of course. You know, we can also see them as metric spaces and topological spaces. So we can actually identify there could be a different thing. You know, if norm is preserved, then also the metric and topology is preserved. But you can have preservation of topology under a map, but not necessarily the norm. Okay. So that was equivalent norms. How do we identify spaces? Now we talk about duals of certain spaces. Dual तो तुम्हें पता ही है, अगर X is a normal linear space, then जो इसका dual है, X star is called dual of X. It is actually, मैंने कहा था, it's bounded linear operators from X to the field K. Of course, X is a normal linear space over K. Then these mapping, यानी ये वो mappings हैं F that are from X to K such that F is linear and continuous. And of course, continuity से हमारा मतलब ये भी है, मतलब it is equivalent to this relation. For some K positive, है ना? Okay. तो हम दिखाना चाहते हैं, we want to show that can we, अगर मैं तुम्हें कोई स्पेस दूं, आप कोई एग्जांपल नॉर्मल लिनियर स्पेस की, से Rn, से Cn, से L1, से L infinity, तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सपोज आई हैव गॉट x is equal to L1. What can I say about x star? of course L1 star, x1 x star जो L1 star है वो इस type, it is defined like this. Can I do better? Can I identify it with? Can I show that it is isometrically isomorphic to something else? Can I relabel into a way that is identifiable as a known space? मतलब इस तरह से ये तो एक है ना, एक criteria. दूसरा है looking at it as a concrete space that I know. Can I find some other space that is isometrically isomorphic to the duals? The answer is yes. और इसका हमें idea मिलता है, it's sort of an, how should I say? So idea है basically
जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट पता है ना? इफ यू R3 में हाँ तुम सर। दो वेक्टर्स लोगे x, राइट? सो दो वेक्टर्स लोगे x एंड y, तो x होगा x1 कॉमा x2 कॉमा x3, y इक्वल टू x y1 सॉरी y2 y3। तो मुझे पता है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं x डॉट y, वो क्या होता है x1 y1 डॉट y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, प्लस x3 y3, है ना? अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर मैं एक वेक्टर को फिक्स करूं, a बिलोंग्स टू r, फिक्स्ड वन, ठीक है? अगर मैं a को फिक्स करता हूं, तो सपोज a इज सम ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स a1 a2 a3। अब a फिक्स्ड है थोड़ी देर के लिए, देन a डॉट x किसके बराबर होगा? a डॉट x होगा, मैं क्यों इसको एरो लगा रहा हूँ, a डॉट x होगा, इफ बी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। तो मेरा जो क्लेम है कि मैं कह रहा हूं ये एक मैप डिफाइन करता है। सो अगर मैं इसको सोचूं, f सब a ऑफ x इसका नाम दूं, सो वेयर आई एम गोइंग इज, अगर मैं a को फिक्स करता हूं और इसको सोचूं एज अ मैप, तो व्हाट्स हैपनिंग, दिस x बिलोंग्स टू R3, और ये जो है दिस इज जस्ट अ नंबर, दिस बिलोंग्स टू R, है ना? बिकॉज इट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स है, तो इनका सम प्रोडक्ट R में ही हो। तो इसका मतलब आई कैन थिंक ऑफ दिस एक्सप्रेशन एज डिफाइनिंग ए मैप f सब a from R3 to R is indeed a map। और वेल डिफाइंड हम आराम से देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर f a of x जो है f a of y के बराबर होगा, it would imply that x is equal to y। x is equal to y, कैसे? क्योंकि इसका मतलब होगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू, अगर ना ये बराबर है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, which would imply that a1 into x1 minus y1 plus a2 into x2 minus y2 plus a3, just a minute, is it true? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दो डिफरेंट इमेज, नहीं मैंने गलत किया, एक्चुअली मुझे उल्टा करना है फॉर वेल डिफाइंड, इससे तो 1 1 तो होगा, है ना? यानी अगर x y के बराबर है, इट वुड इंप्लाई दैट ax is equal to ay, sorry, a dot x is equal to ay, which implies that f sub ax is equal to f sub y। मतलब ये तुम सीधे चेक कर सकते हो, इट इज वेल डिफाइंड। 1 1 तो ये नहीं होगी, इसीलिए ये सही नहीं है, मतलब ये 1 1 इससे प्रूव होता। वेल डिफाइंड ऐसे होता है कि अगर x एंड y सेम है तो इनकी इमेज भी सेम होगी, सो इट इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड मैप फ्रॉम R3 to R। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट इज लीनियर, FA इज लीनियर। तो वो कैसे? अगर मैं लूंगा FA of x plus y, so FA of y किसके बराबर होगा? लेट मी राइट इट, FA of y is a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3, and what is y x plus y खुद किसके बराबर है? It is the vector x1 plus y1 x2 plus y2 comma x3 plus y3। तो अगर मैं इसका, तो it would be a1 into x1 plus y1 plus a2 into x2 plus y2 plus a3 into x3 plus y3, right?
दैट इज द सेम थिंग एज a1x1, जो मतलब जो तुम आराम से देख सकते हो। ये फिर आएगा a of x plus बिल्कुल f of y. f of ठीक है। तो ये जो मैंने हाँ. fa डिफाइन किया, दिस इज fa of x plus f of y। तो मेरे कहने का मतलब है इसी तरह से तुम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हो कि fa of alpha x is equal to alpha times f sub a of x। तो कहने का मतलब मैं क्या देख रहा हूं अभी, मैंने देखा अगर a कोई फिक्स्ड नंबर है इसमें, then f sub a as a dot product is a mapping from R3 to R for a fixed a. I have found an fa such that fa is linear, और चूंकि फाइनाइट डायमेंशनल में है तो therefore it must be also continuous। continuous. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर x है R3, then there is some a which belongs to x star or f sub a which is given by a belonging to R3। तो इसका मतलब अगर x है R3, I can think of कि there exists some a, मतलब बजाय मतलब मैं इस f फंक्शन का नाम a भी तो रख सकता था ना, मैं लिख सकता था a of x, बट वो शायद सही नहीं रहता। तो what I am trying to say कि for every a belonging to R3 I can define something a belonging to R3 का dual। तो इनर प्रोडक्ट की मदद से मैंने देखा I can identify a functional with a vector, or I can identify a vector belonging to R3 by a linear functional belonging to some dual। यानी I can identify functionals with vectors। तो ये आइडिया है। तो अगर मैं क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे x3 को मतलब फिर मैं इससे एक क्या बोलते हैं, एक आइडिया आता है ना, कैन आई डिफाइन, देखो फंक्शनल भी खुद एक वेक्टर होता है ना, बट इट इज ऑल्सो ए मैपिंग। तो हम इसको जानते हैं एज ए मैपिंग, नॉट एज ए वेक्टर। तो हम क्या दिखा सकते हैं, ये जो सारे के सारे वेक्टर्स है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, कैन वी आइडेंटिफाई देम विद रिकॉग्नाइजेबल वेक्टर स्पेस। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें सिखाता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, there is an identification of a vector in R3 or Rn with a functional on the same space R3 Rn। so that's what we are going to pursue। मतलब ये हमारा आइडिया होगा to identify, to show that x star जो है can be identified or is isometrically isomorphic with some known Banach space। सो उसके जो पहला हम करेंगे, ये अगर तुम याद रखोगे, इट हैज गॉट समथिंग टू, मतलब वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज द आइडिया ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट। ओके, नाउ बिफोर गोइंग अहेड वी नीड अनदर डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं शेवडर बेसिस। अभी तुम्हें बेसिस के बारे में कुछ पता है? तो यू नो बेसिस, हाँ। तो पहले मैं जरा यहाँ पे जरा मैं ये डालता हूँ, एक है हेमल बेसिस जिसको हम बोलते हैं, और सिंपली बेसिस, ठीक है ना। तो इफ x is a vector space, then the maximal जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट in x is a basis of x, which implies that, जिसका मतलब ये है okay, it's a maximum linearly independent set is a basis of x। तो basis का मतलब क्या होता है,
If you have an xi, that's a basis of a linear vector space X, then for every x belonging to X, there exists finitely many scalars alpha I belonging to K. I runs from 1, 2 up to n, such that X can be written as a linear combination of some. अब यहाँ पे important ये है as a finite linear combination of these vectors, है ना? तो ये तो हर एक वेक्टर स्पेस पे होगी हेमल बेसिस या वेक्टर बेसिस, और नॉर्मल लीनियर स्पेस के लिए भी होगी, क्योंकि एवरी नॉर्मल लीनियर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस. तो नाउ शाउडर बेसिस क्या है? शाउडर बेसिस हम लेते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी इट इज एन इनफिनिट सेट. ये भी एक इनफिनिट सेट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्बिनेशंस जो होगी वो फाइनाइट होगी. लेकिन दिस वुड बी डिफाइंड ओनली ऑन अ नॉर्मल लीनियर स्पेस. So let X be a normed linear space. So we say EI, I runs from 1 to infinity, is a Schauder basis. Basis for X, इसको लिख लो over K. Schauder basis for X if for each X belonging to X there exists, अब यहाँ पे different है, a sequence of scalars alpha I runs from 1 to n. देखो यहाँ पे क्या था, सॉरी, I runs from 1 to infinity, यहाँ पे finite था, यहाँ पे I goes from 1 to n, यहाँ I goes from 1 to infinity, such that norm of x minus summation I runs from 1 to n alpha I ei, ये जो norm है which is a number, this goes to 0 as, sorry, alpha I है, ठीक है, as n approaches infinity. अब तुम देख सकते हो इसकी definition में norm है, तो it can only be defined on a normal linear space. And of course ये जो corresponding sequence of scalars है for every vector, it won't be a finite set, जो कि यहाँ पे है Hamel basis में वो एक finite set होता है. तो इसको हम बोलते हैं Schauder basis, right? And we write, इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऐसा हो तब हम लिखते हैं x को as summation I runs from 1 to infinity alpha I ei. ये जरा ये फर्क, मतलब ये याद तुम्हें रखना है Schauder basis. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं L1 means all summable sequences. You have to have a sequence x is equal to x1, x2, so on and so forth, such that summation mod xi is, of course, xi belongs to k, and this is less than infinity. I runs from infinity. और इसका जो norm भी यही है, norm of x is equal to summation I runs from 1 to infinity modulus of xi. ठीक है, इसको norm 1 भी कहते हैं. तो इसकी एक Schauder basis. Now if I take en या ei, I runs from 1 to infinity to be इस तरह से e1 is equal to 1 0 0, it's a sequence. इसी तरह से e2 is the sequence 0 at the first place, 1 at the second place, everything else is 0. and इसी तरह से e3 होगा 0 0 1, फिर 0 0, इस तरह से जाते जाएंगे. Of course they all belong to L1 because they are summable, इनका sum तो 1 है ना. Norm of ei is equal to actually 1. So for all I, so ये जो है it is contained inside L1. Now we claim that ei is a Schauder basis
for L1. तो हम देखेंगे क्या है शार्टर बेसिस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है. So consider the scalars. Now let x be equal to x1, x2, so on and so forth. Then xi belong to k. अगर ये L1 में है तो ये स्केलर्स है ना, ये तो फिर स्केलर्स है जो कि बाय डेफिनेशन है स्केलर्स. अब अगर ये स्केलर्स हैं then think of, now consider summation I runs from 1 to n xi ei. वो क्या होगा? It's actually x1 e1 plus x2 e2 plus so on and so forth plus xn en, which is the same thing as x1 into 1 0 0 0 plus x2 into 0 1 0 0 plus xn into 0 0 1 at the nth place, then 0 0 0. So this is the sequence x1 x2 up to xn, फिर है 0 0 0 0. ये वाली सीक्वेंस है ना. और अगर मैं ढूंढना चाहूं what is x minus summation I runs from 1 to n xi ei as a vector, किसके बराबर होगा? अरे सब्ट्रैक्ट करना है तो इट वुड बी 0. तब तक 0 फिर हाँ बिल्कुल इस तरह से होगा. Then you have 0, then you would have of course xn plus 1 xn plus 2, so on and so forth. Now I take its norm L1 norm. जरा मैं यहीं पे लिखूंगा. Now norm of x minus summation I runs from 1 to n xi ei सुप नॉर्म जो है या जो वन नॉर्म है वो है इनका मॉडुलस का सम जो इसके कंपोनेंट्स है. पहले वाले तो 0 है, सो इट वुड बी समेशन x I runs from n plus 1 to infinity in modulus. यही होगा इसका नॉर्म है ना ये, क्योंकि पहले वाले तो 0 है n तक, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम n plus 1 to infinity. ठीक है ना. नाउ लुक एट दिस. This would go to 0 as n approaches infinity because this is tail of a convergent series. क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है ना, ये थिंग जो ये इनफिनिट सम कन्वर्ज करता है, लेकिन इसकी जो टेल होगी वो अगर अप्रोच नहीं करेगी 0 को तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा. या यूं समझ लो टेल ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज, यानी जो बचे हुए टर्म लास्ट में होंगे जितना हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, वो 0 को टेंड करेंगे. सो दैट मीन्स दिस गोज टू 0 एज एन अप्रोच इन्फिनिटी. तो यही तो है डेफिनेशन ऑफ द शार्टर बेसिस. If we can find a set of vectors such that the difference between the finite linear combination from I to n of ei's goes to 0 as n becomes very very large. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये जो मैंने E1 E2 लिया था as set inside L1 is a Schauder basis. अब तुम्हारा होम असाइनमेंट ये है कि E1 E2 यही सेट, it would also be contained inside LP. अगर समेबल है तो P से समेबल है. एक ही है 100 is a Schauder basis. या ऐसे लिख लो is a Schauder basis. 1 के लिए मैंने दिखा दिया, इसी तरह से तुम दिखा सकते हो for all Schauder basis in L sub P for P greater than equal to 1. बट चलो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 less than P less than infinity, क्योंकि L infinity में Schauder basis नहीं होती. तो ये तुम देखोगे तो अभी तक हमने देखा ये Schauder basis, तो इसी को हमें यूज करना है. Now what I want to show in the example of duals, पहला वाला थ्योरम वो ये है कि L1 star summable sequences का star is equal to L infinity. By that I mean बराबरी का मतलब ये है I can identify them as normal linear spaces. Means
L1 star is isometrically isomorphic to L infinity. ठीक है ना? I can identify them as normal linear spaces. So that's what we are going to do. ठीक है? Now, what we do is prove. Now let x belong to L1. जैसे कि हमने देखा, then E1, EI, चलो, I runs from 1 to n, infinity, sorry, where EI is the sequence 0, 0, so on and 0, 0, 0, so on and so forth, where 1 is at the ith place, is a Schauder basis. For L1. Therefore, there exists scalars, there exists unique xi belonging to k such that x can be written as, मतलब Schauder base का मतलब फिर हम लिखते हैं ना इसको ऐसे, I runs from 1 to infinity xi ei, इस तरह से हम लिखें, where x is equal to x1 x2, so जो हमने अभी किया ऊपर वही मैं कह रहा हूं, हम ऐसा कर सकते, ठीक है? So now what we do is we define a map. Now let f belong to L1 star. Then f of x जो है, अब अगर x L1 में है जो कि मैंने कहा है, तो f is a mapping from L1 to k, ठीक है ना? तो f1 is a bounded linear map of L1. Then this can be written as summation क्यों? f of summation I runs from 1 to infinity xi ei. वो क्यों? Because that is how can we write x in L1, because it is a Schauder base. Okay. So ये कहाँ गया? मैंने अभी लिखा ना? हाँ. तो f of x is like this. Now since f is linear and continuous, linear होगा तो finite sum बाहर आएगा. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ. It can be written as limit I n approaches infinity, summation I runs from 1 to n xi ei. अब चूंकि f is linear and continuous, अब आगे मैं इसको खुद ही करूंगा, तो लिमिट बाहर आ सकता है, लिमिट हमेशा बाहर आता है कंटिन्यूअस मैप में. So it would be limit n approaches infinity f of summation I runs from 1 to n xi ei. But f linear है तो finite sum है, so you can write it as summation xi into f of ei. I runs from 1 to n, which is the same thing as summation I runs from 1 to infinity xi f ei, जिसको मैं लिखूंगा summation I runs from 1 to infinity xi yi, where जो ये yi है, it is equal to f of ei, is uniquely determined by f. ये f पे डिपेंड करे, ठीक है ना? तो अब ये जो है ये सेट ऑफ स्केलर्स है. Can you see that f ei is a scalar because f belongs to L1 star. It's a mapping from L1 to k. और E1 जो है वो L1 के अंदर है, f of ei belongs to k. So this is a set of scalars. This is a set of scalars, right? This is a set of scalars. So it is an infinite sum of scalars, right? Yes, sir. So does it converge? Of course it converges because ये जो original sum है ये converge कर रहा है और इसमें बाहर आ जाएगा.
because it is f of x, it's a well defined number. So इसका मतलब ये जो sum है ये converge करता है, it has meaning because it is f of x, and f is a meaningful map. Before by assumption f belongs to L1 star. It's a linear continuous function which can be written like this. और अगर तुम इसको recognize करोगे, अगर तुम्हें दिमाग में आएगा, कुछ आया तुम्हें, अगर मैं कहूँ इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कुछ जैसा है इसमें, डॉट प्रोडक्ट ही है लेकिन वो अब इनफिनिट सम, नॉट अ फाइनाइट सम है ना. इट्स लाइक x1 into y1 plus x2 into y2 plus x3 into y3 so on and so forth. जो हमने वहां किया था ये उसी से लगता है ना, इंस्पायर उसी से हुआ है आइडिया. ठीक है ना? Yes sir. Good. Now let's talk about yi. Now modulus of yk जो है, अब मैंने ली ना ये सीक्वेंस yk जो है yi, तो yi is equal to f of ei. जो नंबर्स हैं मैं देखना चाहता हूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हम यूज कर सकते हैं. नाउ मॉडुलस ऑफ yi जो है, इट इज मॉड ऑफ f of ei, लेकिन ये तो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f इनटू नॉर्म ऑफ ei. लेकिन नॉर्म ऑफ ei जो है वो तो 1 है, सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f. इट मीन्स दैट therefore I can say y equal to y1, y2, so on and so forth. ये एक bounded sequence है, it is less than equal to some number. This must then belong to L infinity. A bounded sequence lies in L infinity. L infinity is the collection of all bounded sequences. So, and not only that, and norm जो इसका होगा, it would be equal to supremum I greater than equal to 1 yi, which is less than equal to norm of f. So what? ऐसे ही रखेंगे, ये अभी खत्म होने वाला है, ये मुझे प्रॉब्लम है. It's less than a minute. तो what we do, तो अब हमने क्या किया, for a f भी क्या मुझे मिला, for a f belonging to L1 star we have found उसकी मदद से y belonging to L infinity. यानी L1 स्टार और L infinity का कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि अगर f यहाँ पे है, I can find this y which is nothing but f of e1, f of e2, so on and so forth. और इसको मैंने y1, y2 कहा है. So it's going to end I think any moment. चलो मैं ही इसको रोकता हूँ, तुम वापस ज्वाइन करो. Join again.